Hello and welcome everyone to English Wings. Today we are going to discuss the extra questions of the last lesson, CBSE Class 12. I've already covered the whole chapter in part 1 and part 2 of the series. Please do go and check out the series to have a clear explanation of the story. I've thoroughly explained the chapter line by line. There's also link of NCERT solutions ताकि आपको NCERT solutions की भी लॉजिक समझ में आए कि आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं और कैसे सॉल्व करने हैं. Please do go and check out the series. The link will be in the description box below. So first we will discuss the type of questions asked in CBSE Class 12 exams. The first one is extract based questions that consist of 4 questions each of 1 marks. The second one is long answers of 5 or 6 marks consist of 1 questions each. Start with the questions today. The first question is, what was France expected to be prepared for the school that day? फ्रांस को उस दिन स्कूल में क्या प्रिपेयर करके जाना था? That day France needs to prepare participles which was a task given by his teacher. टीचर ने उन्हें पार्टिसिपल पढ़ने का काम दिया था ताकि वो उसे नेक्स्ट डे क्वेश्चंस करने वाले थे. The second question, what had been put up in the bulletin board? There was an announcement in the bulletin board which was from the next day German would be taught in the school of Alsace and Lorraine. Alsace और Lorraine दोनों cities के schools में German will be taught and French will be restricted. यही नोटिस बुलेटिन बोर्ड में दिया गया था क्योंकि जर्मन won the war against the Prussians. After grammar, what lesson did they had? ग्रामर के बाद उनकी क्या लेसन्स थी? इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस काफ़ी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं ताकि वो आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में आपको हेल्प कर सकें. उनकी ग्रामर लेसन्स के बाद राइटिंग लेसन्स थी जिसमें उन्होंने ग्रामर की राइटिंग प्रैक्टिस करने वाले थे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई वर सम एल्डरली पर्सन्स ऑक्यूपाइंग द बैक बेंचेस दैट डे? Usually the back benches remain empty, but that day the elderly persons were sitting on that back benches. The elderly visitors occupied the back benches in the classroom on the day of the last lesson. That was the last lesson of M. Hamel. He was going to leave the country. They did this to show their affection for the French language and pay respect to the teacher M. Hamel. The elderly person came just to show the respect to the M. Hamel and their affection for the French language because they were regretting how they ignored their own language of their country and they never tried to learn the language. The next question, what did Franz wonder about when he entered the class that day? फ्रांस उस दिन सोच लिया था कि उसे डांट पड़ने वाली है क्योंकि फर्स्टली वो स्कूल के लिए लेट था, सेकेंडली उसने पार्टिसिपल्स की पढ़ाई नहीं की थी. The answer is, when Franz entered class that day, he was expecting a scolding from M. Hamel. He spoke very kindly and asked him to sit. Franz also wondered at the presence of senior villagers occupying back benches of the class. Franz was wondering why the senior villagers are sitting at the back benches, and M. Hamel was also speaking very kindly today. Why? He was very confused about that. The next question, why did M. Hamel write Vive la France on the blackboard? लास्टली जब एम हैमिल अपने चिल्ड्रंस को फेयरवेल भी बेड नहीं कर पाते हैं तो उन्होंने लास्ट में ब्लैक बोर्ड पर ये 3 शब्द लिखे थे. ये 3 शब्द जो कि उनकी अफेक्शन टूवर्ड्स हिज कंट्री को क्लियरली दिखाता है. एम हैमिल रोट विवे ला फ्रांस ऑन द ब्लैक बोर्ड टू शो हिज लव फॉर his country as well as for the French language. In addition, he was displaying his resistance to the German occupation of France. जर्मन किस तरह से फ्रेंच को रिप्लेस करने वाला था वो ये समझाना चाह रहे थे उन स्टूडेंट्स को, और उन्हें समझाना चाहते थे कि अपनी कंट्री के रिस्पेक्ट को, अपनी कंट्री के लैंग्वेज के रिस्पेक्ट को बना कर रखना सिर्फ और सिर्फ हमारे खुद के हाथों में है. द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव ऑल गॉट अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्स विद. रिप्रोच मीन्स टू जस्ट टू डिफेंड. कैसे हम अपने आप को ही डिफेंड करते हैं हर चीज़ों के साथ, डिसओबे करते हैं. M. Hamel said this as most of the people of Alsace could neither speak nor write French. लोग वहाँ पे खुद को प्राउडली फ्रेंचमैन कहते थे, बट ना तो उन्हें फ्रेंच बोलना आता था ना तो फ्रेंच उन्हें लिखना आता था. दैट वॉज अ शेम टू देम. दैट वॉज अ शेम टू एम हैमिल specifically. The parents of students preferred to put them to work to earn money, and M. Hamel himself did not give much importance to learning as it demanded. उस टीचर ने भी कभी
फ्रेंच को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जितना एक टीचर के होने के कारण उन्हें देने की ज़रूरत थी, और ना ही पेरेंट्स ने उन्हें कभी उतनी जगह दी। यानी वो सारा ब्लेम पेरेंट्स या फिर स्टूडेंट्स को नहीं दे रहे थे, ही वॉज शेयरिंग द ब्लेम अमंग एवरी वन। The next question: how did M. Hamel display his love for the French language? M. Hamel showed his love for the French language by telling the students that the French language was the most beautiful language in the world, the clearest and the most logical. M. Hamel के अकॉर्डिंग फ्रेंच लैंग्वेज वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, क्योंकि वो अपनी कंट्री से बहुत प्यार करते थे, उन्हें अपनी कंट्री के लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा प्राउड था, और इसलिए उनके अकॉर्डिंग फ्रेंच लैंग्वेज वॉज द मोस्ट क्लियर एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। द नेक्स्ट क्वेश्चन: व्हाट वाज एंजलस? एंजलस चर्च में होने वाले बेल को रिंग के कहते हैं, जो कि प्रेयर के टाइम पर लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए बजाया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन: व्हाई डिड वॉचर द ब्लैक्समिथ टेल फ्रांस नॉट टू हरी टू द स्कूल? जब फ्रांस अपने स्कूल के लिए बहुत रश कर रहा होता है, तभी वॉचर उसके रास्ते में मिलता है और वो फ्रांस को धीरे धीरे जाने को कहता है, नॉट टू हरी। Watcher told Franz not to hurry to school because he thought that Franz had plenty of time to reach school. This was because of the news that was displayed on the bulletin board in the town hall. वॉचर ने ऑलरेडी टाउन हॉल के नोटिस को पढ़ लिया था, इसलिए वो फ्रांस को बोलता है कि तुम्हारे पास काफ़ी टाइम है, तुम स्कूल आराम से जा सकते हो। बट फ्रांस इस चीज़ को उस टाइम नहीं समझ पाता है, उसे लगता है कि मे बी ही इज़ मेकिंग अ फन ऑफ हिम। द नेक्स्ट क्वेश्चन: व्हाट इज़ ग्रेट ट्रबल विथ एल्सिस? According to M. Hamel, procrastination among the people who always put off their learning till tomorrow is the great trouble with Alsace. M. Hamel के अकॉर्डिंग एल्सिस में लोगों में प्रोकास्टिनेशन की फीलिंग बहुत ज़्यादा है, स्पेशली फॉर लर्निंग, स्पेशली फॉर स्टडिंग, बिकॉज नो वन pays attention to the study, neither the parents nor the students. पेरेंट्स भी अपने स्टूडेंट्स को काम पर भेजना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं rather than sending them to schools. Did the teacher's words "we were beginning without you" have deeper connotations? Undoubtedly, M. Hamel wanted every children to attend his last lesson, as it was going to be different from his other lessons and day. He wished that everybody should know the importance of mother tongue. Particularly, he wanted Franz to attend that lesson because he never took his mother tongue seriously and always procrastinated. एम हेमिल के अकॉर्डिंग लास्ट लेसन को अलग होना था, क्योंकि वो आज अपने चिल्ड्रंस को फेयरवेल बोलने वाले थे, फेयरवेल देने वाले थे। ही विश दैट एवरीबडी शुड न्यू, उनके अकॉर्डिंग हर एक को अपने कंट्री के लैंग्वेज को बोलना लिखना आना चाहिए। दैट शोज देयर रिस्पेक्ट और द लव फॉर देयर कंट्री। बट द कंट्रीमैन ऑफ हिज country didn't take the language seriously. They never cared enough to learn the language. They always used to procrastinate. So there are few long questions too. Let us discuss the long answers as well. The first one is: write a note on the character of M. Hamel as a teacher. Hamel was a French teacher who had been teaching for 40 years in the school of Alsace. He was a strict teacher who always kept an iron ruler under his arm in order to punish the children for not doing their work. He thought for the welfare of the children and their better future. He was disciplined and obedient to his duties. Having heard about the order that came from Berlin, he got so much depressed and emotional on his last day. He taught everybody the importance of his mother tongue and requested them to guard their language. He knew that was his last day in the school, yet he performed his duty seriously and taught his last lesson in the class, which shows how dutiful he was towards his duties. He held himself and the parents responsible for the poor performance of the people. All the students and villagers present in the class had tears in their eyes for not being sincere and regular in the class. After teaching them all the lessons, M. Hamel stood up and bade farewell to the students by writing "Vive la France" on the board, which means "Live long France." M. Hamel is a very important character in the story after the protagonist Franz. हैमिल वॉज अ फ्रेंच टीचर। हैमिल एक फ्रेंच टीचर थे जो कि 40 ईयर्स से एल्सिस के स्कूल में पढ़ा रहे थे। वो काफ़ी स्ट्रिक्ट टीचर थे। वो अपने ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर ही वॉज वेरी सीरियस। ही ट्राइड दैट एवरी चिल्ड्रन शुड लर्न फ्रेंच। वो चाहते थे कि हर एक बच्चा फ्रेंच सीखे, हर एक कंट्री का लोग, वहाँ के लोग फ्रेंच बोलना और पढ़ना सीख जाएं। वो बहुत ट्राई करते थे कि हर एक को उस चीज़ इम्पोर्टेंट समझ में आए।
वो हमेशा लोगों को मदर टंग की इम्पोर्टेंस को समझाया करते थे। लास्ट डे भी उन्होंने अपनी मदर टंग के लैंग्वेज के इम्पोर्टेंस को समझाया और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि वे अपने लैंग्वेज को गार्ड करें। ही न्यू उन्होंने हमेशा हमें अपने ड्यूटीज़ को रिस्पेक्टफुली पे किया है। लास्ट डे भी उन्होंने काफ़ी ट्राई किया कि अपने क्लास को वो अच्छे से सीरियसली ले पाए। और लास्टली उन्होंने अपनी कंट्री को लव को रिस्पेक्ट के लिए वी विल लव फ्रांस बोर्ड पर लिखकर स्टूडेंट्स को एक मैसेज देना चाहा। Next question is, how did Franz realize the importance of his mother tongue? Franz was an irregular student who wished to live and spend his much of time out of doors. He thought of speaking the class as he was aware of the nature of his class teacher. He took his lessons as a medium of boredom. When he got to know about the order that came from Berlin, he got the landscape under his feet. On reaching school, he learned the lessons honestly and succeeded in learning all of them. Then he realized that it was his fault that he never paid attention to his studies. When M. Hamel taught him about the importance of his mother tongue, that was French, and that is the clearest and the most logical language of the world, they should guard it. He repents over his negligence toward his mother tongue. On seeing M. Hamel's emotion and his patriotism toward the country and his language, he realized the importance of his mother tongue. लास्ट डे फ्रेंच को ये रियलाइज़ हो गया कि वो उसने कितनी ज़्यादा नेग्लिजेंस दिखाई है अपने लैंग्वेज के तरफ। बर्लिन से आए हुए नोटिस के बाद उसे समझ में आता है कि काश उसने इस लेसन्स को सीरियसली लिया होता, क्योंकि लास्ट डे जब उसने सीरियसली अटेंशन पे किया तो उसे हर चीज़ क्लियरली समझ में आने लगी। उसे समझ में आया कि कैसे उसने एम हैमल के इमोशन, एम हैमल के पैट्रिज्म को फॉर ग्रांटेड लिया है। आज तक उसने उस लैंग्वेज को फॉर ग्रांटेड लिया था, लेकिन आज वो रिपेंट के अलावा कुछ नहीं कर रहा था, इसलिए उसने लास्ट डे के क्लास को सीरियसली करने की कोशिश की। The next question is, when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. Comment on the basis of the story, the last lesson. लोगों को इंस्लेव होने के बाद भी उनके प्रिजन का की सिर्फ उनके हाथ में होता है, दैट इज़ द लैंग्वेज। Political enslavement is a curse for any nation as it deprives of its identity. Political enslavement के कारण किसी भी country की identity खत्म हो जाती है. The natives of the country do not enjoy any kind of freedom, be it physical or mental. The ruling government or the powerful compels them to abide by the rules justified or unjustified. एक country जब दूसरी country को capture कर लेती है तो उस capture करने वाले country के rules कैप्चर्ड कंट्री में भी फॉलो किए जाने लगते हैं। उनकी लैंग्वेज, उनकी लाइफस्टाइल सब कुछ चेंज हो जाती है। At such time, it is their language, mother tongue, which keeps their identity alive. At least they can speak in their mother language. That doesn't happen in Lawrence as well. It is their language which unites them against the foreigners who have invaded their motherland. इन्वेडर्स के बावजूद भी हम अपने लैंग्वेज में अगर बात करें तो हम में वो यूनिटी रह सकती है अकॉर्डिंग टू द ऑथर. It is also the key to their prison as the mother tongue binds them together. It constantly reminds them to their enslavement and brings them together to fight for liberation of their motherland. M. Hamel in the chapter The Last Lesson reminds his countrymen to safeguard their language after they received orders from Berlin banning the teaching of French in Alsatian school. The natives can liberate themselves only if they recognize and maintain their identity through their mother tongue. एक कैप्चर्ड कंट्री की आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाती है, उनके पास उनकी अपनी लैंग्वेज को छोड़कर कुछ नहीं रहता है. दैट इज़ वाई दे ट्राइड Hamel tried to instill a feeling of patriotism among the minds of the citizens. So these were all the long questions and the short questions. Hope you all liked it. There is a bonus short note for this story after this. If you all like the questions, if you all like the explanations, please do like, share and subscribe to my channel. And if you have any kind of confusion, any queries, please do comment in the comment section below. I would really answer all your questions. I would like to answer all your questions. So the short note is about linguistic chauvinism. That is the main theme of the story. It is a strong belief that our language is superior to others. Linguistic chauvinism refers to the superiority of one language over others. This theme is effectively brought out by the writer Alphonse. Alphonse has tried to discuss about this chauvinism in the story as well. So please read this short note about the linguistic chauvinism. If you have any doubt, please do comment in the comment section below. I would like to answer all of you. If you have any suggestions for the upcoming videos, if you want a specific explanation of any chapter, please do comment in the comment section below. I would happily make videos about them. Please do like, share and subscribe to my channel, and take screenshot of these answers so that you can
read these answers as well, and please do watch the video again and again so that you can understand the concept as well. The part 1 and part 2 of the videos will links will be given in the description box below. NCERT solutions have also been provided. Please do go and check out the videos. Thank you for watching the video. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.